तो मैंने गुस्से में एक कॉमेडी लिखी। फिल्म मुझे जो बनाएगी मैं वो बन जाता हूँ। कुछ चीज़ें आपको इजीली आती नहीं, यू नो, आई वुड नॉट want to be what I am not. Can you tell us something about the storyline? फिर आई हसीन दिलरुबा, just a little bit of hint for the viewers, you know. It's in the space of pulp fiction. It's light-hearted, but pulp in itself is a genre. Yeah. So it has love and crime and passion. Even the mystery is delicious. Yeah, okay. कि जिस तरह से वो कहानी unfold होती है, Okay. उसका एक अपना मजा होता है। तो ये उस space की है, something that keeps you at the edge of your seat. Great. So here I am, ladies and gentlemen. Cook Speaks is with Jaiprath Desai. Jaiprath, a very pleasant evening, and thank you. We are sitting at a lovely view at Hotel Radisson at Bhopal. You can see the back. So how do you like Bhopal, Jaiprath? I love Bhopal. I mean, I've been coming here for quite some time now. और मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया होता है। लोग भी अच्छे। लोग तो खैर वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन this is a good time of the year. Very good time. Yeah, it was a warm summer this year, you know. Yeah. Jaiprath, ladies and gentlemen, coming for the first time in Cook Speaks, Jaiprath is a master's in filmmaking and direction and writing from New York, and he's got his connectivity to a very, very reputed family of the Indian film industry, Mr. Vasant Desai. He was a renowned music director. So, Jaiprath, any sort of a memory of Mr. Vasant Desai, and how was he related to you? He was my grandfather. वो मेरे पिताजी के चाचा थे एक तरह से। But he died before I was born. So unfortunately, I never met him. He had a very sad, unfortunate death. No, I think he died in the lift or something. In an accident. It was an accident. Yeah, not very old also. Not very old. And it was very weird. Yeah. One of the very rare sort of, freak. I can call it as a freak accident. A freak accident, actually. Yeah. It was quite sudden. So that helped. You know, interestingly, I was born on the same day, on 22nd December. A few years later, though, many years later, but so a lot of people in my family thought कि यार कोई connection है उसी दिन। And he died the same day, is it? He died the same. Okay. Generally, अपने Hindus में उसको they take it as a reincarnation. मतलब एक वसंत देसाई हमारे परिवार में आ गया उसी दिन था। ऐसा it's just a belief, you know. It's a Hindu belief. Right. So anyway, those are different issues altogether. But the help of that family or the tag of the Desai family helped you in stepping down on the Indian film industry? Well, not really. I studied to be a computer engineer. And you are a computer engineer? I am a computer engineer. So after I finished my 12th, my family was not really keen on me joining the film industry. Or rather they were कि यार computer engineering कर लो, marks अच्छे थे तो वो हो रहा था बहुत आसानी से। मैं चाहता था कि मैं fine arts में कुछ करूँ। You had more inclination towards that creativity, I think. Right. But at that time they were quite insistent कि नहीं अभी नहीं, ये हम बाद में देख लेंगे। तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 4 साल। हालांकि जब वो चल रहा था तो I was working, I was doing a lot of theatre, मैं मॉडलिंग करता था। So on such a, I was on a ramp show somewhere, and one of the judges on the ramp show, she happened to be a choreographer. Okay. और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये किसी एड की ऑडिशन हो रही है तो आप वहाँ पर जाओ। तो मैं वहाँ पर गया और मुझे उस एड में काम मिल गया। And on that set of that ad, I got intrigued in what happens behind the camera. Okay. रुचि पहले से थी क्योंकि थिएटर करता था, पढ़ता था, फिल्में देखता था, फैमिली में भी शायद था कुछ हद तक। लेकिन उस दौरान जब मैं पहले बार सेट पे था तो I got interested and I told the director कि यार मुझे can I hang around when you edit Did your education in New York give you that sort of a liking to go to this line? That happened much later. अच्छा, that happened much later. ये तो इंजीनियरिंग जब कर रहा था। अच्छा, उस पीरियड की बात। हाँ, तो अच्छा, उसके बाद फिर आपने मास्टर्स में किया? हाँ जी, तो तभी मैंने 1-2 एड्स में काम किया। फिर मैं असिस्ट करने लगा डायरेक्टर्स को। एड्स का शूट 1-2 दिन का होता था। म्यूजिक वीडियोस होते थे बहुत उस जमाने में। तो आई स्टार्टेड असिस्टिंग वेरियस डायरेक्टर्स ऑन द सेट, और कॉलेज के साथ मैनेज कर लेता था क्योंकि एक आध दिन का शूट होता था। By the time I finished college, I had decided कि मैं इसे seriously as a career pursue करना चाहूँगा। तो तब तक मेरी फैमिली राजी हो गई थी कि यार अभी 4 साल इंजीनियरिंग तो कर ली,
अभी हम इसे नहीं रोक सकते, अभी अगर फिर भी उसे ये करना है तो we can't stop him anymore. We're talking about early 2000, such a smart and a handsome man. You never got offers going in front of the camera? Well, जैसे मैंने वो कुछ एड्स वैड्स किए ना, वहाँ पे ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होने लगा बिहाइंड You are more fond of going behind the camera. हाँ, तो फिर वो मर गया, वो ग्लैमर का जो एक ये था वो नहीं रहा, वो पहले से नहीं था। शायद इंक्लिनेशन इसी में थी कि what I'm actually drawn towards is the art of storytelling. और वो करते करते सिनेमा की जब थोड़ी बहुत जान पहचान आई तो समझने ये मालूम हुआ कि टेक्निकली इसे समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए फिर असिस्ट करो, कि उस ज़माने में ये मास्टर क्लासेस और ऑनलाइन और यूट्यूब और ये सब कुछ होता नहीं था। तो फिजिकली आपको एक्चुअली ऑन साइट जाके ये सब सीखना पड़ता था। तो 2-3 साल मैंने वो किया और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड एंड देन यू डिड योर मास्टर्स। आपके परिवार में एक और नाम बहुत मशहूर था जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, मंगेश देसाई साहब। हाँ। वो भी आपके रिलेशन में थे? हाँ जी, वो भी ही वाज अ लेजेंड। He was the pioneer of sound engineering in India. Yeah, absolutely. And उन्होंने एक तरह से इंडियन सिनेमा का साउंड री-रिकॉर्डिंग करते थे। उसको आज मिक्सिंग कहते हैं या साउंड इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा का साउंड जिस तरह से आज है वो उन्होंने एक तरह से डिजाइन किया है। I think the viewers should go, open the old movies somewhere in the 70s and the 80s. In every movie, you will get sound recorded by Mr. Mangesh Desai. Yeah. Am I right, sir? बिल्कुल, मतलब more or less about 80 to 90% of the movies you will 95% I would say. क्योंकि सत्यजीत रे से लेके मनमोहन देसाई तक, मतलब कोई भी स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग हो, राज कपूर हो या वी शांताराम हो या ऋषिकेश मुखर्जी हो या विजय आनंद, all the films, they are top names here. And everyone in between, मतलब नए फिल्म मेकर्स भी हो, यश चोपड़ा भी, जब नए I think he was a legend. He was a legend. Jaiprad, you know the list of the movies I was just seeing before I came for the talk. You really made very serious and committed movies. You're not one of those comedy ones or the chalta purta ones. You've got real solid stuff. If you see, we have got Mukhbir, and then of course my favorite, Kaun Praveen Thambe. How did that strike? Kaun Praveen Thambe? ये जो प्रवीण तांबे की कहानी, I think that was one of the. Sorry, I'm just interrupting you, but for the viewers, Kaun Praveen Thambe really brought you to the limelight. Yeah, I did. You made lovely movies before that. Right. I mean, as I said, you've got Mukhbir, you have got Nagrik, which was an acclaimed Marathi movie. Then you had Hutatma, again an acclaimed movie. Right, then you had Rosebush, which you said you made while in your college days, but again acclaimed. It was not one of those trash movies which was acclaimed by the critics. But this was one movie which brought you commercially into the forefront in the Indian cinema. Everyone now knows Kaun Praveen Thambe, Jaiprad Desai. That name is now attached with you. So what prompted you to select a man who made his debut at the age of 41? His life story to begin with. हालांकि कौन प्रवीण तांबे was the first Hindi movie that I made. मुखबिर उसके बाद आई। अच्छा, मुखबिर उसके बाद आई। Okay. उसके पहले नागरिक और हुतात्मा मराठी में करेक्ट था। But both are awarded movies. हाँ जी, बिल्कुल। तो वो हालांकि कहानी प्रवीण तांबे की हम सबको पता थी जब उन्होंने हैट्रिक ली थी IPL में 2013 में। तो राजस्थान रॉयल्स। हाँ, राजस्थान रॉयल्स KKR के अगेंस्ट। तो तभी ये बात आम हुई थी कि अच्छा ये 41 का है और just Did that attract you? हाँ, मतलब that propelled me to want to know more about him. Was it an initiative from your side or was it an initiative from the producers? No, it's very weird because I was approached by Friday Film Works and Neeraj Pandey. Neeraj sir was aware of my work. Nagrik उन्होंने देखी थी एक फिल्म फेस्टिवल्स में और he was in touch with me. हम स्क्रिप्ट्स के बारे में। Neeraj Pandey, again, if I'm not mistaken, Wednesday. हाँ जी, Wednesday special. Again, beautiful, absolutely fabulous movie. तो उन्होंने धोनी बनाई और धोनी के बाद he wanted to come up make more sports films. Okay. So उन्होंने एक sports vertical बनाना चाहा। Okay. जिसको जन्म दिया सुदीप, जो उनका भाई था। ओके। तो अंडर फ्राइडे फिल्म वर्क्स दे स्टार्टेड बूट रूम आइडिया लैब। ओके। जो सिर्फ स्पोर्ट्स तरह की फिल्में बनाना। बेसिकली यू वर अप्रोच्ड बाय हिम। आई वाज अप्रोच्ड बाय नीरज। कंसेप्ट एवरीथिंग वाज हिज।
Yes. Okay. They had bought the rights, the life rights of Praveen. You Thambe. naturally must have met Praveen Thambe many times. Yeah. How was he as a character? How was he as a person? You know, must be a very simple. He is simple. See, there are three things that struck me when I met him. One, he is childlike. Okay. You know, he has a childlike enthusiasm about things. और हम जब उनसे मिले तब तो वो शायद 47-48 के होंगे. फिल्म जब तक आई वो ऑलमोस्ट 50 के हो चुके थे. But he had that childlike enthusiasm about everything. He was extremely positive about life. कि दरअसल कई बार जब जिंदगी में आपको बहुत टाइम लगता है, सफलता नहीं मिलती, तो एक बिटरनेस आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है जिंदगी, ये सही नहीं है और लोग ऐसे ही है, ज़माना ऐसा है. तो वो नहीं था. He had the sweetness and the innocence, he was always positive about life. In real life also. And he was too simple, मतलब कोई एयर नहीं था, जो कई मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन कुछ चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स आपको देती है. हाँ. You have got many arrogant sportsmen also. You've got very arrogant cricketers who are playing for the final tomorrow. I will not name them. But what one heard and what I wanted to impress upon the speakers was his simplicity, Yeah. Started as a pace bowler. Right. Started as a pace bowler. Pacer, then he converted himself into a leg spinner. And then he didn't play a Ranji and was brought to the Rajasthan Royals mainly, I think, by Rahul Dravid. He stayed put at playing, and हालांकि in India it is very difficult to, because he had a family, you have to support your family. ऐसे कंपनियों में उन्होंने काम किया जहाँ पे उन्हें क्रिकेट खेलने मिले, तो कई बार बहुत कम सैलरी हुआ करती थी, एकदम हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होता था. एक टाइम ऐसा आया जब ही वर्कड एज अ वेटर. अरे बाप रे बाप, अरे बाप. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सपनों को नहीं छोड़ा. क्या बात. एंड दैट इज व्हाट द फिल्म इज, कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. क्या बात. ड्रीम्स डोंट कम विद एन एक्सपायरी डेट. एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओनली अ फिल्म अबाउट अ स्पोर्ट्समैन. दिस कैन बी अ स्टोरी ऑफ एनीवन. चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो आप कोई भी हो लाइफ में. There is no, your dreams don't come with an expiry. There's no deadline. It's never too late to start. कई बार हमारे आम जिंदगी में ऐसे होता है कि एक 20-25 साल की उम्र तक हम कहते हैं कि आप स्ट्रगल करो, try your hand at something. अगर ना हो तो कुछ और करो भाई, फिर शादी ये लगा रहा. फिर अब हम बच्चों से चाहते हैं कि वो ये करे, हमारे सपने पूरे करे. लेकिन ये नहीं था. ये इस तरह से कमिटेड था बंदा कि मंजिल को हार कर उसके कदम चूमने पड़े. क्या बात. And I was reading about him. He still plays cricket. And he's about 52-53 now. Right. He still plays club cricket, which is remarkable for his age. Right. So a lot of great. He is the support staff with at the IPL. Yeah. He coaches. He has a cricket academy in Mumbai. अरे वाह. So yeah, Did IPL change his fortune a little bit in terms of money? Of course, he did. I mean, what he was maybe about 10 years back, much better off than that. Absolutely. And his passion is also there on the road now. Absolutely. So I had asked you this question. You don't have a flair for comedy, those मस्ती वाली, नहीं है. हालांकि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताऊंगा. जब नागरिक आई थी तो वो थोड़ी सी पॉलिटिकल थी, थोड़ी सी सीरियस फिल्म थी, और मुझे बहुत. It was based against a politician basically. The political backdrop of महाराष्ट्र overall. एक कोई आदमी ऐसे नहीं था, लेकिन लोगों का ये धारणा हुई फिल्म देख के कि ये बहुत सीरियस फिल्म मेकर है, कि ये ऐसे. वो तो मेरी भी धारणा. नहीं, पर मैं कहता हूँ, मैं आई एम सीरियस अबाउट स्टोरी टेलिंग बट नॉट अबाउट टेलिंग सीरियस स्टोरीज. फर्क है. हाँ. तो मैंने गुस्से में एक कॉमेडी लिखी, जब नागरिक की, क्या लोग ऐसे ही फिल्में, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप जल्दी से ब्रैकेट हो जाता है, करेक्ट. कि प्रवीण तांबे के बाद मेरे पास बहुत सारी स्पोर्ट्स फिल्म्स ऑफर होने लगी कि ये अभी स्पोर्ट्स. Which I didn't do. With purpose? हाँ, एग्जैक्टली, सो दैट आई डोंट गेट स्टीरियोटाइप. मुखबिर के बाद बहुत सारे स्पाई थ्रिलर्स आने लगे कि ये स्पाई थ्रिलर का. तो ऐसा कुछ नहीं है. मैंने करके हमारी स्ट्रेंथ है, और क्योंकि मैं फिल्म स्कूल से आया हूँ, आई हैव अ मोर academic approach towards I think I have to inherit the genre. मैं कोई नहीं होता. Correct. फिल्म मुझे जो बनाएगी मैं वो बन जाता हूँ. जैसे एक्टर उस किरदार के रंग में ढल जाएगा, मैं भी मेरे फिल्म के रंग में ढलने की कोशिश करता हूँ. तो कॉमेडी की भी फ्लेयर है और
जरूर बनाऊंगा। मेरे ख्याल से one of these years we must hear Jaiprakash coming up with a good comedy flick, or a little light-hearted sort of a movie. बिल्कुल, fingers crossed. Your coming projects, Jaiprakash, any coming projects of yours which you want to discuss? So there is this film called Phir Aayi Haseen Dilruba. Phir Aayi Haseen Dilruba. Is it a sequel to the old one, Haseen Dilruba? Yes, okay. yes, which came a couple of years ago, and it was the most successful film on Netflix. तो ये उसी का सीक्वल है एक तरह से। और विक्रांत मैसी, तापसी पन्नू, very good star cast यार। हाँ, and this time we have Sunny Kaushal and my God, so that's coming out in Mr. Messi is a big name now. He's a big name, and he's a fabulous actor. I mean, he caught us all on the Mirzapur serial also. He was there in a short role, but he was impressive. No, but that's what I was telling him, कि deservedly so. I mean, he has been one of the most amazing actors that we have had for a long time, and he has diligently delivered. तो थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री है ऐसी कि आप कई बार जैसे प्रवीण तांबे के साथ हुआ, लोग एक्नॉलेज थोड़ी करने में थोड़ी देर हो जाती है। तो एक्नॉलेज अभी हो रहा है वो। But I'll tell you, I mean, sitting with you and you're in front of the camera, something like your personality, you're not an extrovert at all. I mean, I've never seen you on the social medias, you've got your small Insta account or small Twitter account. You're more happy with your people who like you. You're not a blah blah social bang bang bang. I've never seen you something like Vikrant or Messi also. He's not a publicity, crazy chap. Right. I think you all believe into the simple theory that work speaks. Absolutely. Am I right, sir? So then that's why we are here. वही करना था, तो we are driven to. But don't you feel at times with the caliber and the talent you have, Jaiprakash or Vikrant Messi, for example, he has got a little bit of social media promotion is also essential? It is, and to some extent it has become imperative now. Yeah. पर एक ये भी चीज़ होती है ना कि कुछ चीज़ें आपको easily आती नहीं. I would not want to be what I am not. तो एक तरह से all this is a natural extension of who you are. तो मैं कुछ हद तक कर लेता हूँ कि जब फिल्म रिलीज होनी है या कुछ जब जो आपके पीआर और फिल्म की जो पीआर टीम होती है वो आपको कहती है अच्छा अभी ये पोस्ट करना पड़ेगा, अभी ये हो, तो मैं वो करता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत मजा कम रहता है, आपका कम रहता है, मैंने देखा कहानियों में मजा आता है। So this movie फिर आई हसीन दिलरुबा कब रिलीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 9th August. So can you tell us something about the storyline if you feel just a little bit of hint for the viewers, No, I see it's in the space of pulp fiction. Okay. Hindi pulp is something that all of us have grown up. Correct. जो रेलवे स्टेशन पे जो टंगी हुई किताबें थी 10 रुपए की और 30 रुपए की, उस टाइप की। हाँ। Maybe this is a light-hearted movie. It's light-hearted, but it's about see, pulp in itself is a genre. Yeah. So it has love and crime and passion. Mixture of all. So it's not light that way. Okay. But is it as serious or trying to make a statement about something? No. Yeah. It is good fun. Okay. And then I said sometimes even the mystery is delicious. Yeah. Okay. कि जिस तरह से वो कहानी unfold होती है, okay, उसका एक अपना मजा होता है, तो ये उस space की है, something that keeps you at the edge of your seat. Great. So I think, ladies and gentlemen, we all should look forward to the release of that movie. Jaiprakash is there with me, and I hope Jaiprakash does well. Thank you so much, sir. Coming to the end now, just 2-3 small questions with you. You have been in the film line, as you said. Your grandfather Vasant Desai ji was there, Mangesh Desai ji was there. Any actors who stands very tall in your mind? Someone who has impressed you a lot over the years. Like all time? Yeah. So I am a big fan of Nasir Saab. I have grown up watching him. Nasiruddin Shah. Yeah. I'm a big fan of Amitabh Bachchan, of course. So many of them, मतलब और जब जैसे आप इवॉल्व होते हो ना, तो आपको वो बारकाइयाँ समझ में आती है, तो that those choices also evolve. Yeah, exactly. Over a period of time. So maybe you have this dream to direct both these stalwarts one of these days. Absolutely. Amitabh ji and Ranbir Kapoor, I think right now is somebody. Vicky Kaushal. Yeah. Amazing talent. They're absolutely a different class altogether. This young breed which has come is absolutely different class. Any directors favorite on your list, Jaiprakash?
Indian? Yeah, anyone. It could be anyone from abroad also. There's some inspiration because since you are a director, and so there are many again. There was just for the name. Federico Fellini. Okay, Italian डायरेक्टर है जो मुझे बहुत मतलब पसंद। आप देखते हो? आप ये फिल्म्स देखते हो? हाँ, देखी है मैंने ये सब, और फेलिनी की तो कई फिल्में कई बार देखी है। और यार ये मैं जो नाम लूँगा अलग अलग जॉनर्स के डाइवर्स है, अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग इराज के हैं जी। पर फेलिनी हो या उनसे भी पहले जॉन रॉनवा करके जर्मन डायरेक्टर थे, या स्टीवन स्पीलबर्ग हो। यार वो तो खैर ही इज द मास्टर। या एनी इंडियंस योर फेवरेट? Could be anyone. Vijay Anand. Yeah, I think Vijay Anand is one of the most underrated directors. Absolutely. I mean, if you see his 3 movies, which I still remember, Johnny Mera Naam was a comeback for Premnath, Devanand, Teesri Manzil, and I think one was with Devanand. Jewel Thief. No, amazing. What movies here? What? और एक जैसे मैंने कहा कि Indian. What about Guide? Absolutely, Guide. I mean, they are actually landmarks movies. They're cult movies. Absolutely. They're cult movies. In fact, अभी जब कुछ महीनों पहले गाइड और ज्वेल थीफ री-रिलीज हुई थी, तो मैंने वापस जाकर देखी थी थिएटर में। गाइड इज अमेजिंग। हमें कभी ये सब फिल्में थिएटर में देखने का मौका नहीं मिला। अच्छा, you go there. नहीं, अभी आपने जब देखा रिलीज हुई ये फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने वो फिल्में पुरानी रिलीज की थी, तो मैंने थिएटर में जाके टू विटनेस। गाइड इज ऑल टाइम क्लासिक. I mean, there's no comparison about. Jayaprad, the last one now before we conclude, any message to the youngsters who want to join this line, who are young, is course ज़रूरी है कि आप एक फिल्म लाइन में कोर्स करें? आप जैसे अपन इंजीनियरिंग के लिए 3 डिग्री का कोर्स करते हैं, क्या फिल्म के लिए भी मुझे कोर्स करना चाहिए? क्या मेरे को शौक मिला मैं बम्बई चला जाऊं? जस्ट 2 लाइनर sort of a guidance to the youngsters who are so crazy nowadays to go write something or act into the films in Bombay. नहीं, देखिए मैं जब सीखा ना ये, तभी जो हालात थे और अभी जो हालात है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मैंने कहा कि उस जमाने में we didn't have access to films. Correct. Unless we go to a film school. We didn't have access to equipment unless we went to a film school. Correct. पिछले 10 सालों में कुछ चीज़ें इस तरह से बदली है because of broadband, the explosion of information in a way. So everything is available at your fingertips. Correct. So the whole idea of film schools, I think, has to be redefined now, has to be reinvented. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि film school ज़रूरी नहीं है. Understanding and honing the craft is necessary. अभी वो किस तरह से आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है. ये उस पर भी निर्भर है कि आप किस तरह के इंसान हो. कई लोग हैं, मेरे कई दोस्त हैं जिनकी they are not programmed in a way कि वो एक क्लासरूम में बैठ के या एक कोर्स में ये चीजों को उतना पेशेंस है, उतना पेशेंस हो, क्योंकि each one of us is different. So different things apply for different people. The most important thing is to understand who you are. अगर मैं उस तरह का बंदा हूँ जो हैंड्स ऑन काम करके मैं जल्दी सीखूंगा, गलतियां करके फिर और बड़ी गलतियां करके फिर सीख के इस तरह से मैं आगे बढ़ता, शायद that is what suits me. Or I might be somebody who wants to enjoys books, who enjoys watching master classes online. तो ये हर एक का अलग है. ये जरूरी है आप ये जाने कि आप कौन हो. Correct. And what suits is your preference. Yeah. And I think just work, start from there. I think there's no substitute for hard work, Jayaprad. I mean, you work so hard and you've been working. I've been knowing you now for how many years. So it's basically hard work and patience. Right. You have been very patient, till the time you got this con. Seriously. Bilkul. I've been knowing Jayaprad from the last 10-15 years, at least 10 years now. But slowly you have really worked hard to where you are right now, So it was patience and hard work. Yeah, believe in yourself. Believe in, that's the main thing. बहुत कभी देर होती है लेकिन And if you don't believe in yourself, watch Kaun Praveen Thame once more. That will give you a lot of grit and determination. No, we learn a lot from our films. मैं हमेशा कहता हूँ कि हम फिल्में तो बनाते हैं, खैर फिल्में हमें बनाती हैं. कि जो एक फिल्म बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, that gives birth to the filmmaker. जैसे बच्चा माँ को जन्म देता है. Correct. एक तरह से तो वैसे with every film you're reborn. क्या बात. And you find yourself again. Correct. And I'm still मुझे कुछ आता नहीं है. If a man becomes a stagnant, then learning finishes off. So you have to keep on changing.
you have to keep on evolving. Maybe the next movie you evolve more. Absolutely. And in any different direction altogether. Yeah. No, I would, with each film, as I said, you're reborn. Yeah. And I would want that. And that is the most amazing Yeah, that's thing the learning about process. That's the learning process. Anyway, so I hope, ladies and gentlemen, you've liked this lovely talk show with Jaiprakash. Jaiprakash, thank you so much. Thank you so Took much, out sir. some time and talked with us, and we wish all the best for your forthcoming. Thank you, sir. It's been such a pleasure. Jai Hind, sir.